Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I am with the part 4th of the previous video, that is ectopic pregnancy. Today the contents I'll be covering is the abdominal pregnancy, cervical pregnancy and corneal pregnancy. Firstly, talking about the abdominal pregnancy. This abdominal pregnancy, it is one of the ectopic pregnancy in which the conception takes place in the abdominal area, and its incidence is the rarest. And how can we say the concerned client is having the abdominal pregnancy? She can have the history of irregular bleeding, that is spotting, nausea, vomiting, she may be having flatulence or constipation, she may be having, or she may be having the diarrhea or the abdominal pain, and including the fetal movements. If they are found, they may be very painful, and they may be very high in the abdomen from the very beginning. So on examination of the client with the abdominal pregnancy, we can see the abnormal fetal position can be easily palpable, fetal parts can be easily palpable, and the uterus can be palpable out of the from the sac. And that is and there can be after the administration, if we go for the administration of the oxytocin infusion, there will be no uterine contractions, because there is no pregnancy in the uterus, definitely. Then the types of the abdominal pregnancy. Basically, there are two types of the abdominal pregnancy: the primary and the secondary. Talking about the primary, this primary implantation of the fertilized ovum, it is definitely on the peritoneum, right? And it is so real that its existence is questionable. So because I have already told you, this abdominal pregnancy, it is the rarest one, and since it has a type called the primary, where the conception or the implantation of the conceptus, it takes place on the peritoneum, which is the which is the rarer form. However, there are certain criteria which is laid down by Studded-Ford, we say the Studded-Ford criteria to diagnose the primary abdominal pregnancy. Basically, he laid the three criteria for this to say whether the lady is having the abdominal pregnancy. That is, first, both the tubes, that is the fallopian tubes and the ovaries, they are normal without any evidence of recent injury. This is the first criteria. The second, absence of the uteroperitoneal fistula, there is no uteroperitoneal fistula found, and the this presence of the pregnancy related exclusively to the peritoneum surface. And we can say that there is this pregnancy is present, and which is relatively exclusively, but where it is present, it is exclusively present in the peritoneal surface. These are the three Studded-Ford criteria laid by the Studded-Ford to diagnose the primary abdominal pregnancy. Now, the secondary abdominal pregnancy. Abdominal pregnancy is almost always, I can say, the secondary, because the primary one is the rarest one. The primary sites पहले fertilization होती ही होती है in the primary sites, like the tube, or the primary sites can be pregnancy can be in the tubes, the pregnancy can be in the ovaries, and even in the uterus. And when the conceptus escapes out through any rent in the uterine scar, then this pregnancy is said to be the secondary. And the morbid pathological processes take place, and there are the average evidences of about 1 in 3,000 pregnancies are found in the category of the secondary abdominal pregnancy.
What are the now symptoms of the second this abdominal pregnancy? First of all, as earlier also, it has been suggested that there is a there are various types of the history we get from the women having the abdominal pregnancy, like the spotting, like the pain in the abdomen. Likewise, history also suggestive is suggestive of the disturbed tubal pregnancy during the अर्लियर मंथ्स विच मे बी हैविंग जिसकी वजह से उसको पेन इन द लोअर एब्डोमिनल होगा या वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होगी वेरी ऑफनली एंड देयर आर माइनर अलाइनमेंट्स ऑफ द नॉर्मल यूट्रीन प्रेगनेंसी दे ऑफन एग्जैजरेट फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल यूट्रीन प्रेगनेंसी में होता है क्या होता है नोशिया वोमिटिंग कॉन्स्टिपेशन तो या फीटल मूवमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा ही एग्जैजरेट हो जाता है इस वाले category mein, that is the in the abdominal pregnancy. Now there are the signs in the advanced pregnancy. If the pregnancy is now advanced to certain months, what are the signs in this advanced abdominal pregnancy? Definitely there is the uterine contour. It is not very well defined even by massaging the abdominal wall. Why? Because as there are the Braxton Hicks contraction, they are totally absent in the abdominal pregnancy. Because when we see when the uterine pregnancy वो बढ़ती है जब नॉर्मल यूट्रीन प्रेगनेंसी होती है देयर आर एट अ सर्टन टाइम ब्रैक्सटन हिट्स कंट्रैक्शन which are normal but they should not increase before the term. That may be the concern, that may be the question of the concern, but there are Braxton Hicks contraction. But in case of the this advanced abdominal pregnancy, these Braxton Hicks contraction are usually absent. The second thing, the fetal parts, they are easily felt, and there are persistent abnormal attitudes or positions of the fetus, which is commonly found in the repeated examination also are very common. And they are very high, there may be the high position of the fetus, abnormally high position of the fetus, which because of the presence of the fetus in the intraperitoneal cavity, and the fetus is lying low in the intra-ligamental pregnancy also. Now talking about the internal examination, what we found in the internal examination, if we go for the internal examination of the what is called as the abdominal pregnancy, the uterus, it is very difficult to separate from the abdominal mass. Means we cannot distinguish the uterus from the this abdominal mass, and it is if it does, it enlarges to 12 to 16 weeks, but cervix is not typically very soft जैसा होता है, and it is usually displaced depending upon the कि क्या पोजीशन रहेगी सैक की, उसकी वजह से क्या उसको बोलते हैं सर्विक्स भी ना ही सॉफ्ट होता है ना ही और अपनी पोजीशन से भी डिस्प्लेस्ड हुआ होता है. एंड टोटली जो यूट्रस है, इट कैन नॉट बी सीन सेपरेटिंग फ्रॉम द व्हाट इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल मासेस. And there are various imaging studies which we do for diagnosis of the abdominal pregnancy. The very important imaging studies is the sonography. It is commonly performed, and हम क्या देखते हैं इसमें features, absence of the uterine wall around the fetus obviously नहीं होगा क्योंकि implantation तो peritoneal area में हुई है. Abnormally high position of the fetus हम देख सकते हैं with abnormal attitude, with जो fetal parts है वो obviously वो हमें easily ये palpable हो सकता है because they are very close in approximation to the abdominal wall of the mother. और क्या इसको बोलते हैं, हम सीधे ही देख सकते हैं कि uterus separate है और fetus separate, they are separated.
and even this, in the sonography there can be the error in diagnosing the abdominal pregnancy also. The second thing which we do imaging studies is the MRI, that is magnetic resonance imaging. They can confirm the diagnosis, and it can be very much accurate. Or we can go for the CT scan as well, or the but we prefer to go for the MRIs, because CT may have the high radiation risks also. X-ray, we can go for the straight X-ray, which shows the abnormally high position of the fetus with definitely जब हाई पोजीशन दिखाएगा, मगर उसके साथ साथ हमें दिखाएगा कि आउटलाइन जो है यूट्रीन शेडो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फीटस यूट्रस के अंदर नहीं है, तो हमें आउटलाइन यूट्रीन की नज़र नहीं आएगी। और हमें हमें कुछ शेडो मिल सकती है, गैस लाइक शेडो ऑफ दिस क्या इसको बोलते हैं, ऑन द फीटल स्कल एज वेल। अगर हम लेटरल एक्सरे भी करेंगे इसमें ऑन द स्टैंडिंग पोजिशन, देयर मे बी ऑल्सो द सुपर इम्पोजिशन ऑफ द फीटल स्केल्टन शेडो ऑन द मैटरनल स्पाइन। सीधे हमें दिख सकता है कि फीटस का शेडो मैटरनल स्पाइन पर पड़ रहा है, बिकॉज देयर इज नॉट, द फीटस इज नॉट प्रेजेंट इन द यूट्रीन कैविटी। वो हो सकता है इसमें। और हाईली अगर हम सजेस्टिव फीचर्स की बात करेंगे कि क्या हो सकता है, देयर कैन बी रिपीटेड फेलियर ऑफ इंडक्शन फॉर द यूट्रीन फीटल डेथ, वो हो सकता है। या ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ द लेबर बाय ऑक्सीटोसिन यूट्रीन कंट्रैक्शंस नहीं एक्साइट हो जाएंगी। तो डेफिनेटली ये सारी जो फाइंडिंग्स है, ये हमें बोल सकती है कि द प्रेगनेंसी इज़ द एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। नाउ द मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हम। वन इज़ हमने डायग्नोस किया, ठीक है, एंड वी हैव टू फेवर द अर्जेंट लेप्रेक्टमी फॉर दैट, irrespective of the gestational age, कि कितना इसका पीरियड ऑफ गेस्टेशन है, हमें इमीडिएट करना पड़ता है व्हाट इज़ कॉल्ड एज लेप्रेक्टमी। और क्यों क्या इसको बोलते हैं कि लेप्रेक्टमी, आपको पता है इट इज़ एन आइडियल सर्जरी जिसमें हम रिमूव कर सकते हैं एंटायर सैक, फीटस, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स। एंड क्या इसको बोलते हैं, दिस कैन बी अचीव्ड अगर प्लेसेंटा क्या इसको बोलते हैं अटैच्ड होगा टू द रिमूवेबल ऑर्गन लाइक यूट्रस या ब्रॉड लिगामेंट्स। और अगर प्लेसेंटा कभी वाइटल ऑर्गन्स तक भी क्या इसको बोलते हैं अटैच्ड होगा, तो हम पहले ही इसमें फीटस को बाहर निकालते हैं और प्लेसेंटा को फ़िलहाल रहने देते हैं। एंड देन क्या इसको बोलते हैं हम बाकी प्रोसीजर्स के टाइंग एंड कटिंग के ज़रिए से फिर प्लेसेंटल अटैचमेंट्स को भी बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये लेप्रोक्टोमी में हम करते हैं, लेकिन ये लेप्रोक्टोमी हमें करनी ही करनी पड़ती है, बिकॉज रिस्क्स बहुत होते हैं कि अगर हमने कंटिन्यूशन की इस प्रेगनेंसी की, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, जो ही हमें डायग्नोस हो गया, वी हैव टू गो फॉर लेप्रोक्टोमी। क्योंकि इसकी वजह से कैटास्ट्रोफिक हेमरेज हो सकता है, फीटल डेथ हो सकती है, फीटल मालफॉर्मेशंस इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज इट इज़ नॉट नॉर्मल टू हैव द प्रेगनेंसी इन द एब्डोमिनल। ये नॉर्मल यूट्राइन प्रेगनेंसी नहीं है, जिसकी वजह से इंक्रीज न्यूनेटल लॉस हो सकता है। सो दस कंटिन्यूशन ऑफ दिस प्रेगनेंसी फॉर फ्यू मोर वीक्स के होपफुली कि बेबी मैच्योर हो जाए टू सर्वाइव, इट कैन बी just a lame justification and nothing else, but we have to go for laparoscopy and immediately remove the fetus from the abdominal cavity. This is the management of the abdominal pregnancy. Now coming to the second type of the pregnancy, that is the cervical pregnancy. Cervical pregnancy, you all know the word indicates कि किस तरीके से when the implantation occur होती है in the cervical canal, or we can say जब implantation होती है below the internal os of the cervix, तो उस वक्त हम क्या उसको बोलते हैं, ये cervical pregnancy होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इरोजन हो सकता है ये वॉल्स का,
सर्विकल वॉल्स का बिकॉज ऑफ द ट्रोफोब्लास्टस, जिसकी वजह से थिनिंग हो सकती है, या डिस्टेंशन ऑफ द सर्विकल कैनाल हो सकता है. सो वो हो सकता है, लेकिन ये कभी कभी सर्विकल प्रेगनेंसी इट इज़ वेरी मच कॉमनली कंफ्यूज्ड विद द सर्विकल एबॉर्शन ऑल्सो. एंड अगर हम बात करेंगे इस सर्विकल प्रेगनेंसी में, इसमें ब्लीडिंग पेनलेस होती है, और जो क्या इसको बोलते हैं, जो यूट्रीन बॉडी होती है वो अबोव द डिस्टेंडेड सर्विक्स पार्ट ऊपर ही होती है, एंड द बिलो पार्ट इज़ डिस्टेंसिबल, जो सर्विक्स का रहता है. और क्या इसको बोलते हैं, इसमें हम देख सकते हैं प्रोफ्यूज हेमरेजेस होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी वेरी हाई हो जाती है. इसमें इंसिडेंट्स की बात करेंगे, इट इज़ 1 in the 18,000 इंसिडेंट्स हो सकता है इसका सर्विकल प्रेगनेंसी का. नाउ कमिंग टू द रिस्क फैक्टर्स कि किस किस वजह से सर्विकल प्रेगनेंसी हो सकती है. अगर पिछली टाइम पे प्रीवियस कोई एबॉर्शन होता है उस वजह से हो सकती है, या सिजेरियन सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी हुई होगी पिछले टाइम, एशरमैन सिंड्रोम जैसे मैंने बोला, एडहेशंस फॉर्म हुए होंगे, या आईवीएफ इंट्रा फर्टिलाइजेशन विवो फर्टिलाइजेशन हुई होगी, या लियो मायोमा हुआ होगा, दैट इज़ द फिब्रॉइड, जो यूजुअली बिनाइन स्मूथ मसल का ट्यूमर होता है, वो यूजुअली कैंसरस नहीं बन जाता है, इन रेयर केसेस बन जाता है. उसकी वजह से ये सारे एज अ रिस्क फैक्टर काम कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग द सर्विकल what is called as pregnancy. Now how can we diagnose the cervical pregnancy? Usually हम clinical diagnostic clinical criteria जो पॉलमैन और मैकलेन ने दिया था, वो डायग्नोस यूज़ करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द क्लाइंट इज़ हैविंग द सर्विकल प्रेगनेंसी और नॉट. इसमें हमारा क्राइटेरिया, क्लिनिकल क्राइटेरिया में यूट्रीन ब्लीडिंग आता है, जैसे कि मैंने बोला, विदाउट एनी पेन, नो क्रैम्प्स, एंड विच विल बी फॉलोड बाय एमेरोडिया, टोटली सिजेशन ऑफ द साइकिल हो जाएगा. सर्विकल डिस्टेंशन हो जाएगी, वो मैंने बोला कि ट्रोफोब्लास्टिक्स की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से थिन वॉल्स हो जाएंगे और उसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट हो जाएगी. एनलार्ज्ड यूट्रीन फंडस ऊपर की तरफ हमें पैल्पेट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल ऑस के ऊपर से साइड से हमें यूट्रीन नॉर्मल मिलेगा, जो नीचे वाला पार्ट है वही सिर्फ डिस्टेंडेड होगा. इंटरनल ऑस हमें क्लोज्ड मिलेगा, और एक्सटर्नल ऑस पार्शली हमें ओपन मिल सकता है. ये सारे चीज़ें क्लिनिकली एविडेंट होती है फॉर द सर्विकल प्रेगनेंसी. Now how can we manage the cervical pregnancy? Basically cervical pregnancy का सर्जिकल ट्रीटमेंट है. इसमें हम रेडिकल सर्जरी कर सकते हैं, दैट इज़ द टोटल हिस्टेक्टमी कर सकते हैं. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में वी कैन गो फॉर द DNC, बट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट देर आर द रिस्क ऑफ द हेवी ब्लीडिंग, या मेडिकली हम क्या इसको बोलते हैं सिंगल या कम्बिनेशन ऑफ दीज कर सकते हैं अलॉन्ग विद द सर्जरीज, या एडजॉइंट टू द सर्जरी हम मेडिकल मैनेजमेंट भी दे सकते हैं, जिसमें हम मेडिकेशंस लाइक मिथोट्रैक्सेट या एक्टिनोमाइसिन या KCL मेडिकेशंस इन कम्बिनेशन विद द सर्जिकल थेरेपी दे सकते हैं. ये आता है इसके मैनेजमेंट में ऑफ द सर्विकल प्रेगनेंसी. Now the third type is the cornual pregnancy. Cornual pregnancy pregnancy जो rudimentary horn of bicoordinate uterus में होगी, जो हमने already पहले इसके types में डिस्कस किया था, वहाँ पे होगी. तो the horn does not usually communicate with the uterine cavity, but the impregnation it is presumed कि हुआ होगा बाय द स्पर्मेटोजोआ, जो पास करेगा थ्रू द नॉर्मल हाफ ऑफ द यूट्रस एंड द ट्यूब. एंड उसके बाद जब उसने पास किया थ्रू द नॉर्मल हाफ ऑफ द यूट्रस एंड द ट्यूब, फिर फर्टिलाइजेशन
ovum के साथ होती है, either in the peritoneal cavity or in the tube which is connected to the rudimentary horn of what is called as the rudimentary horn of the bicoordinate uterus, उधर हुआ होता है. And जो concerned ovum होता है, it is usually shed definitely by the ovary on the same side of the rudimentary horn. वो वहीं से जिधर से fertilization होगी, जिस area this part से fertilization होगी, जिस rudimentary हॉर्न पे फर्टिलाइजेशन होगी, उधर से ही ओवम का फर्टिलाइजेशन स्पर्मेटोजोआ में हुआ होता है. एंड जनरली जो लोकल रिएक्शन सिमिलर होता है इस कॉर्नियल प्रेगनेंसी का, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि ट्यूबल प्रेगनेंसी में होता है, मगर ज़्यादा इंटेंसिफाइड होता है और प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू नहीं होती है. इट मे नॉट कंटिन्यू फॉर द मच लॉन्गर टाइम. एंड टर्मिनेशन होता है बाय रप्चर. ठीक है ना, रप्चर यूजुअली बिटवीन 12 to what is called as 20 weeks with the massive इसमें intraperitoneal hemorrhage होता है इस cornual pregnancy में. नाउ कैसे डिफरेंशियल डायग्नोस कैसे करते हैं कॉर्नियल प्रेगनेंसी का. यूजुअली हम व्हाट इज़ कॉल्ड एज वी गो फॉर द इंटरस्टिशियल ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है तब, या पेनफुल अलायोमा अलोंग विद द प्रेगनेंसी होगी, या ओवेरियन ट्यूमर विद द प्रेगनेंसी होगी, या एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस होगा बिकॉज ऑफ द इम्प्लांटेशन इन द कॉर्न्यूआ, दैट इज cornea of the normal uterus, which is sometimes called as the angular pregnancy also. तो ये differential diagnose बन सकता है in the cornual pregnancy. नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट कि कैसे ये ट्रीट हो सकता है. हमें सीधे ही जो पार्ट अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड कॉर्न्यू, वी विद दिस प्रेगनेंसी वी रिमूव दैट, और वी कैन गो फॉर द टोटल हिस्टेक्टमी ऑफ द क्लाइंट हैविंग द कॉर्नियल प्रेगनेंसी. That was all about today's topic. Hopefully I'll be soon with the next part of that is ectopic pregnancy. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.